रिगार्डिंग पता है। अब आपके एग्जाम है ना बायो का, सो पढ़ लिया है बायो के फ्रॉग के बारे में, फिजियोलॉजी। वेन फ्रॉग, जो फ्रॉग है उसकी जो लाइफ साइकिल है, इफ यू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल, हाउ इट स्टार्ट्स, कैसे स्टार्ट होती है। यस, हु कैन टेल मी। यू कैन यूज चैट बॉक्स ऑल्सो बेटा, एज यू यूज, जैसे आप यूज करते हो, यू कैन यूज इट। यस, क्या जो फ्रॉग है उसका जो बच्चा है, ठीक है, या फिर इफ वी से द whatever it release, it looks like adult frog, क्या वो adult frog की तरह लगता है या डिफरेंट लगता है। yes, different, how Simrandeep is saying it's different, yes. So there is no, we can say, connection between young and adult, but eventually जो young है वो फाइनली एडल्ट जैसा कुछ टाइम बाद लगता है। और इस जो जर्नी है इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। Now the interesting thing that I want you to know is that young one, when we say the frog lay egg, है ना, हमें पता है कि frog जो है egg lay करता है ना, lay eggs। अब जो ये egg है, it turns into a structure that is called tadpole, it convert into tadpole structure, and this tadpole feed on something, ठीक है, कुछ खाता है, जिस चीज को ये खाता है it is, the tadpole is herbivorous, means ये कुछ भी फ्लैश या दूसरे इंसेक्ट को नहीं खाता, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट उसी को ही खाता है, ठीक है। सो इट इज हर्बीवोरस, बट adult frog is not herbivorous, it is carnivorous, मतलब ये इंसेक्ट्स को खाता है, it feed on insects, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दिस, वेरी सिंपल थिंग, बट हमें पता नहीं होता, सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू नो अबाउट दिस। एंड वन मोर थिंग, एडल्ट फ्रॉग जो है सिर्फ जो मूविंग इंसेक्ट्स है, नॉट सिटिंग, जो बैठे हैं उन पे नहीं फीड करता, जो मूव है उसी को वो सेंस करता है एंड उन पे अटैक करता है। सो फीड ओनली ऑन मूविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। So this is the thing. I want everyone to note down and turn in your camera on. Beta, why your camera is off again? Turn it on. Everyone, camera on karo beta. Okay. So now, this is about this thing. Now, few terms that is given in your NCRT also. Egg. When we talk about the egg, ठीक है? The egg of frog. We are talking about frog egg. Every egg, पहले तो ये देखो, सभी एग के दो पोल्स होते हैं, लाइक अर्थ इज हैविंग पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एग इज हैविंग पोल, जो ऊपर होता है दैट इज एनिमल पोल, इट इज एनिमल पोल, और जो नीचे होता है दैट इज वेजिटेटिव पोल। एंड इट इज, जो एग है उसमें योग जो होता है बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता, सो उस टाइप के एग को हम कहते हैं मीजोलेसिथर। So their egg is mesolecithal. Then second thing is, जो उनका yolk है, it is concentrated here in the vegetative pole side, जो vegetative pole है इस साइड होता है उनका yolk, तो उस टाइप के एग को हम कहते हैं टीलोलेसिथर। So इसको लिख लो बेटा, it is your competitive exam point of view and also your board exam point of view, ठीक है। सो इसको लिख लो, ऐसे बना लो, डायग्राम के बेस पे बनाओगे तो इट विल बी मोर इजी टू कनेक्ट, ठीक है, रिकॉल करना इजी रहेगा जितने डायग्राम बनाओगे। सो दिस इज व्हाट। नाउ नेक्स्ट थिंग, फ्रॉग की अगर बॉडी को डिवाइड करें, फ्रॉग्स बॉडी,
So it is divided into only two parts. दो parts में divided. Can any one of you tell me? Kindly repeat it. I'm not getting. बेटा egg वाला part सिमरनप्रीत. This part. Okay. So egg सबको पता है कैसा दिखता है. अगर let's take example of जो आपने देखा है of hen. ठीक है, मुर्गे के अंडे की बात करते हैं. जो टॉप वाला पार्ट है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एनिमल पोल. जैसे अर्थ का एक पोल होता है ना. लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है. अर्थ का जो ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल. वी कॉल इट नॉर्थ. और नीचे वाले को कहते हैं साउथ. वैसे ही एग इज हैविंग टू पोल्स, बट वी आर नॉट नेमिंग इट एज नॉर्थ एंड साउथ. दिस इज कॉल्ड एनिमल एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव पोल. ठीक है. अब जो योक होता है, योक पता है, एग के अंदर योक होता है येलो कलर का. हैंड में भी देखने को मिल जाएगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द योक. इफ दे आर हैविंग लेस योक, मतलब जितना योक नॉर्मली होता है उससे अगर कम होता है, तो उस टाइप के एग्स को वी कॉल इट मीजोलेसिथल. ओके, हैविंग लेस योक कंटेंट. अब वो जो योक है, क्या वो ऊपर की साइड है, एनिमल पोल की साइड है, बीच में है, या वेजिटेटिव पोल की तरफ है? Then we name egg accordingly. Up in frog case, we are talking about frog. So in frog, it is concentrated here towards vegetative pole. जो vegetative pole है वहां पर है. तो उस egg को हम क्या कहते हैं जहां पर yolk vegetative pole की तरफ होता है? Telolacithal. We call it telolacithal. Lacithal means yolk. ठीक है. Meso मतलब हो गया कम, telo मतलब हो गया vegetative वाली side. Is it clear, Simran? Okay. ठीक है. So now let's move ahead. So we were discussing about frog's body. It is divided into two parts. तो क्या parts होते हैं? Who can tell me? Head and trunk. Yes, it is head and trunk. तो कौन सी चीज मिसिंग है जो कि नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में होती है? It doesn't have tail and neck. तो जो उनका माउथ है, it is directly connected with the trunk. ठीक है. First thing is this. Now when we are talking about their body, so let's move into the physiology then. ठीक है. So I have given you brief idea about the frog. ठीक है. So now we are moving ahead with the digestive system, and that is very easy because it is more or less like our human system. ठीक है. जो हमारा जो digestive system है, it is more like that only. The working is like that. I'm not talking about the structure. I'm talking about the working. ठीक है. It starts from the mouth like us. अब अपना जो मुंह है उसको देखो, अगर चबाते हो, लेट्स डू द एक्टिंग ओनली. ठीक है. एक्टिंग करके देखो कि चू जब करते हैं हम, जब किसी चीज को चबाते हैं, तो कौन सा जॉ मूव कर रहा है? कौन सा कर रहा है? कैन यू सी? द लोअर वन. यस, ओनली द लोअर वन इज मूविंग एंड द अपर वन इज इमूवेबल. सेम केस इज विद द फ्रॉग ऑल्सो. उसका भी जॉ होता है. ठीक है. The upper one is fixed. ठीक है. लोअर वन इज मूवेबल. ठीक है. अब उसके पास टीथ होते हैं, बट इट इज नॉट फॉर द चूइंग. चूइंग के लिए नहीं है. उसके जो टीथ है वो भी एक ही जॉ में है ऊपर. दैट इज फॉर कि ताकि वो जो भी चीज उसने पकड़ी है स्वेलो करने के लिए, इट विल नॉट गो बैक, वो मुंह से बाहर ना निकले. टू क्लोज इट ओनली. ठीक है. इट्स पर्पस इज दैट ओनली. दैट्स इट. बाकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. सो दैट इज व्हाट. सो फिर उसके बाद आ जाता है कैविटी. कैन यू टेल मी द कैविटी नेम? माउथ के बाद जो कैविटी आती है, वी हैव दैट कैविटी, बक्कल कैविटी. यस, वी डू हैव बक्कल कैविटी जिसके अंदर हम खाना डालते हैं. नाउ देयर कैविटी इज कॉल्ड बक्कोफेरेंजियल कैविटी because it is merging of buccal and pharynx. ठीक है. So that's why their cavity is called buccopharyngeal cavity. Okay. Now we are going to draw the structure. So everyone try to make it. ठीक है. सब इसको draw करो everyone. So पहले हम सबसे पहले start करेंगे when we are drawing the structure of digestive system.
let's move to this. We will make heart. अब आप सोचोगे digestive system पढ़ रहे हैं, why we are drawing heart? Because it is also shown in your NCERT also, and it will basically help you to draw it. So this is the heart that you have to draw. ठीक है, ऐसे बना लो. Okay, everyone firstly draw heart. अब heart से हमने wing like structure बनाना है. We are going to draw a wing like structure from the heart. ठीक है. Now this is wing like structure. Eagle लग रहा है ना? It is like eagle. Okay. अब यहाँ पर eagle के बीच में हम एक छोटा सा fruit like structure बनाएंगे. Okay. Round and then जैसे पत्ते होते हैं, like this. And to show organs that are not part of digestive system, I am using this blue color. ठीक है. Blue color मतलब digestive system का part नहीं है. ऐसे 6 structures बना लो, pipe like structures. ठीक है. Labeling me, let's do it. This is heart and the wing like structure is liver. It's liver and liver के साथ क्या होता है जो हमारे पास भी है. Next to liver is gallbladder. ठीक है. This structure that is coming out, it's lungs. ठीक है. This जो ऐसे निकला हुआ है पाइनएप्पल के ऊपर जैसे बंचेस होती हैं, it's basically fats. ठीक है. We can say fat bodies. And this bean-like structure is kidney. And this tube-like structure is esophagus, यानी food pipe. जो ब्लू के अलावा बेटा स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. पहले इतना बनाओ देन वी विल मूव अहेड. पहले ऊपर का समझो. सो यू हैव टू मेक इट लाइक दिस जैसे मैंने बनाया. ठीक है. सो फर्स्ट हार्ट, देन हार्ट के दोनों तरफ बीइंग लाइक स्ट्रक्चर. सो हियर ऑन दिस साइड यू विल मेक अ फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. डेमन लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. देन दोनों विंग से नीचे की तरफ एक जो ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर दिखाओगे दैट इज बेसिकली लंग्स. ठीक है.
देन यहाँ से मिडल से जो एक स्ट्रक्चर पाइप लाइक स्ट्रक्चर विल कम, जिसके दोनों तरफ आप किडनी बीन जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, या फिर ऐसा भी है जैसे कार्टून में बनता है कि फेस और ऐसे ऐसे बाल दिखाते हैं, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, सो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। सो दिस इज किडनी। देन यहाँ से हमारा जो है सिस्टम इज स्टार्टिंग, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस, एंड दिस इज स्टमक, इट्स स्टमक। Okay, so now let's move. Okay. So now this stomach, ऐसे stomach को दिखा दो बेटा, ठीक है? Now it is going to make 3 coils, 1, 2 and 3. ये 3 coils बनी है। And from this kidney, ureter. Use different color if you can. Use different colors, beta. This is intestine. This red color is rectum. It's rectum. This is wing-like structure again. It's a urinary bladder. Okay, it's a urinary bladder. For that, I'll do one thing. I color it with a blue color. As I say, जो हमारे digestive system का part नहीं है, that will be color in the blue. So now it's blue in color. So this is urinary bladder. This is cloaca. This is the opening. ठीक है? So this is all about digestive system. ठीक है? Frog's digestive system. So to make frog digestive system, firstly you have to draw these structure जो कि उसके part नहीं है, because digestive system का जो structure it is revolving around all these structures. That is basically respiratory and circulatory and
एक्सक्रीटरी, क्योंकि फ्रॉग इतना बड़ा नहीं होता कि उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग अलग, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर आल्सो. इज इट क्लियर हाउ टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर नाउ? ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करना है. अगर आप रट्टा लगाओगे कि ऐसे डू, नो यू कैन नॉट डू इट. फर्स्टली ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, देन यू हैव टू मेक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो 3 कॉइल्स है. ओके, देन हियर इज रेक्टम जहां पर ये ओपन हो रहा है, यूरेटर एंड आल्सो द फूड आल्सो. ठीक है, नाउ इन द फूड लाइक अस, इसकी जो वॉल है इट सीक्रेट्स HCl एंड गैस्ट्रिक जूस लाइक इन ह्यूमंस आल्सो. ठीक है, एंड partially digested food यहाँ पर होता है, that is called chyme or chyme, partially digested food. And then it goes to small intestine, and small intestine के पास pancreas, pancreatic and bile juice दोनों आते हैं. So complete digestion यहाँ पर होती है in intestine, then it goes to the rectum and then it released from the flow. Is it clear to everyone? So this is very simple. I know its structure is a bit different from our digestive system, but the function is almost same. Is it clear? They do have villi, they have everything like us. ठीक है? They have bile juice, they have pancreatic juice, they have HCl. Is it clear? Okay. So now let's move to the next physiology or next system, that is circulatory system. अब फटाफट मुझे बताओ, फर्स्टली दे हैव ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम. कैसा सिस्टम है इनका? Okay, rectum is that part where excreta, we can say, जो solid waste है, it stores. जैसे humans में also in the rectum, large intestine में होता है, where undigested food or waste food digested, sorry, stores, जब तक अर्ज ना हो बॉडी से बाहर निकालने. ठीक है बेटा? Who asked me? Okay, Simran. Yes, beta, is it clear what is rectum now? Okay. So, yes. अब मुझे बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज क्लोज्ड और ओपन? टेल मी फास्ट, इज इट क्लोज्ड और ओपन? क्लोज्ड और ओपन का क्या मतलब होता है? वी ह्यूमंस हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? एंड इफ आई से कॉकरोचेस हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसका क्या मतलब हुआ? डू यू नो दैट द डिफरेंस क्लोज्ड एंड क्या कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट डज इट मीन? You can write down in the chat box. Closed and open. I have given you hint. We humans have closed circulatory system, but cockroaches do not have. They have open circulatory system. What does it mean? क्या मतलब होता है इसका? हाँ, क्लोज का ध्यान से सुनो. हमारा जो ब्लड है बाउंडेड विद कैपिलरीज. ओके, नवज्योति इज सेइंग दिस. क्लोज टू द आंसर. सो बेटा क्या होता है, इफ वी से दैट जो हमारा ब्लड है हार्ट से जब पंप होता है, ठीक है, इट डजंट पोर इनटू द ऑर्गन्स, वो दूसरे ऑर्गन्स में अपने आप नहीं चला जाता. इट कैरिड बाय सम ब्लड वेसल्स. यस, ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं ना. ऐसा तो नहीं है सीधा के सीधा पंप किया और जो है जहां पर जाना चाहिए वहां पर जाके गिर जाता है. यस, ऐसा तो नहीं होता. तो इस सिस्टम को कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक नेटवर्क और ब्लड वेसल्स आर देयर. सो आई कैन सी द आंसर फ्रॉम द सिमरन. A closed circulatory system contains blood within blood vessels, while in open system, circulatory fluid is dumped from heart into open body cavity. Yes, so that is right. So जो हमारा, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उनका जो ब्लड है that is not carried by the blood vessels. ठीक है, so that is what. So let's take an example. थोड़ा सा और इसको अच्छे तरह समझते हैं क्योंकि students get confused with this. आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, यू आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है, बकेट में निकाल रहे हो.
सीधा जाके जो है उसमें डाल दिया आपने, जहां पर घड़ा है या टैंकी है उसमें डाल रहे हो, ठीक है, ऐसे हो रहा है। इट्स अ ओपन एंड, ठीक है, लिया और डाला, लिया और डाला। बट इन योर होम नाउ डेज वी हैव पाइप सिस्टम, वाटर पाइप सिस्टम है सबके घर में, ठीक है, आपके बाथरूम में, वॉशरूम में, किचन में, यू जस्ट टर्न ऑन द टैप और पानी आ जाता है। कैसे आता है? थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ के प्रेशर से आ रहा है, बट इज कमिंग थ्रू द पाइप्स, नेटवर्क ऑफ पाइप्स, ठीक है। इट इज क्लोज सिस्टम। क्लियर है? इज इट क्लियर कि अलग अलग जगह जा रहा है लेकिन थ्रू पाइप्स, ठीक है। So this is closed system. Then one more interesting thing about the frog. Frog के जो heart है उसमें कितने chambers होते हैं? Do they have same number of chambers that we have? जैसे हमारे अंदर 4 chambers, we have 4 chambers. Yes. Upper one, जो upper 2 हैं, those are called auricles. और जो नीचे के हैं, these are called ventricles. So now tell me, okay, Navjot is saying 3 frog. Okay. In frogs, 3. Yes, you are right. Can you tell me the name also? Who can tell me the name of these 3 chambers they have? Yes, she is right. Navjot is right. कौन से 3 chambers होते हैं in frog? 2 atria. Okay, Simran is saying 2 atria and 1 ventricle. That's right. That's right. So Navjot is also mentioned the same, 2 atria and 1 ventricle. That's right. That's right. Good beta. So yes, अब आप सोचो, if they have 2 auricles and 1 ventricle, तो क्या ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होगा? इज देयर एनी चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड? क्या होगा ऐसा? ओके, सिमरन इज सेइंग यस। सो यस, सो देयर ब्लड इज मिक्स बेसिकली, ठीक है, उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स्ड। व्हाई इट इज मिक्स्ड? बिकॉज दे हैव ओनली 1 वेंट्रिकल्स। और ऑरिकल से बेशक ऑरिकल में एक में ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, एक में डीऑक्सीजनेटेड, बट फाइनली इट इज pouring where? It is going where? In the ventricle, and they have only 1 ventricle, ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है, ठीक है। सो वहां पर मिक्सिंग होगी, ठीक है। सो लेट्स, अब इसको एक काम करते हैं, फर्स्टली ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स नॉट इन योर एनसीईआरटी, सो आई वांट एवरीवन टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करो। दिस इज वेंट्रिकल एंड नाउ आई एम ड्रॉइंग auricle. So this is the structure. Everyone draw the structure of heart, frog's heart, basically. And also this is double membrane structure. इसकी कवरिंग होती है पेरिकार्डियम। This is right auricle that receive deoxygenated blood. Receives deoxygenated blood. This is left auricle that receives oxygenated blood.
And as you know, this is ventricle. Single ventricle, so no left, right, simple ventricle. This is aortic arc. So I'll do one thing में circulatory system ये जो लिखा हुआ है, I'm removing this because it's coming between my diagram. So this is how frog's heart look like. Okay. So draw this beta because it is theoretically given in the NCERT, but it's not diagrammatically given. Okay. So that's why I'm telling you here. Now is it done? So now let's see the functioning of this also. Okay. So I'm drawing it छोटा सा बना रही हूँ because now I have to tell the functioning of this. ठीक है? Now here the right end, as I told you, it is receiving end of deoxygenated blood. Now from where the oxygenated blood comes? From different parts of the body. ठीक है? Now who receive or collect the deoxygenated blood and finally give to the right atrium? That is important. So write down the name of that also. ठीक है? सभी उसका नाम लिखो. Sinus paresis. Okay. Deoxygenated blood ये देती. ठीक है? And it is getting from where? It is getting from different body parts. We will discuss about this also. ठीक है? So now coming to the another part, that is lungs. Okay. So let's say these are lungs. And now what is the function of lungs? To provide oxygenated blood. ठीक है? It will provide oxygenated blood through pulmonary veins. ठीक है? तो पल्मनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स. ठीक है? सो नाउ फाइनली द ब्लड, लेट्स color it. Suppose the oxygenated blood I'm showing here is in blue in color. ठीक है? And I am drawing or giving white color to the deoxygenated blood. और deoxygenated blood को मैं white color कर रही हूँ. Now it will drain into ventricle. Ventricle में आएगा. So what is going to happen? There will be mixing. तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? Mixing of the blood. So oxygenated and deoxygenated will get mixed here in the ventricles. ठीक है? Now this blood will go to different parts of the frog. ठीक है? Through conus arteriosus, or we can say truncus arteriosus. ठीक है? Now through main artery, it will go to tissues. And then from tissues, main vein, that is vena cava. Now this become deoxygenated after tissue receives the oxygen.
it will go to sinus venous. And then finally deoxygenated blood pour into this. Now here blood is traveling. May everyone draw this? First is CNS, yani central nervous system. Then is PNS, means peripheral nervous system. Then last is ANS, means autonomic nervous system. We will discuss what is in all of these. इसमें है क्या? Central nervous system mainly consists of brain, brain and spinal cord. Okay. When we talk about PNS, PNS is क्या? क्या होता है peripheral nervous system? Who can tell me? What is peripheral nervous system? Now brain cannot go anywhere, है ना? Brain तो वहीं रहेगा जहां पर है. But something is coming out from the brain. What are those? Nerves, है ना? Nerves आती है ना brain से इधर से उधर. Okay, they take the information and also give information to the brain. So that network is called PNS. ठीक है? That is PNS. तो हम उसकी बात कर रहे हैं. So we can say peripheral के बारे में the nerves, okay, arriving from the CNS constitute PNS. Okay, जो nerves आ रही है, ठीक है, brain cannot go anywhere, but still it is called control house because it control everything. So I can say in similar way the PNS consider nerves, ganglia, which lie outside. So ganglia is very important. Students get confused. It is basically neuron composition or we can say content only. ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है how information will go, and it's especially control what part that is not work as involuntary. Involuntary means क्या हो गया? वॉलंटरी इनवॉलंटरी क्या होता है? आवर हार्ट इज बीटिंग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. Involuntary. ठीक है, सो दैट इज इनवॉलंटरी. सो इट कंट्रोल्स वॉलंटरी, मतलब जब हमें चाहिए, लाइक वी वांट टू रेज आवर हैंड, एनीथिंग, सो इन दैट केस इट विल वर्क. ठीक है, सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो. ठीक है, नाउ कमिंग टू एएनएस. ठीक है, अब एएनएस में हियर वी डिस्कस अबाउट इट इंक्लूड्स, here it includes nerves and ganglia. Okay, nerves and ganglia that controls and coordinate such organs
which are not under voluntary control. I think I have to raise this voluntary control. Okay, that is ALS. That is not under voluntary control. So we have to here. Okay, I'm moving it more. So we have two. I'm using different color now. Sympathetic nerve system and parasympathetic nerve system. Okay. So make it like this. In PNS, we have two types of nerves, cranial nerves and spinal nerves. नाम से ही पता चल रहा है where these are. ठीक है, स्पाइन्स में ये cranial is brain. ठीक है, एंड दोनों के 10 पेयर्स होते हैं. ऑल दो स्पाइन का जो है we say 9, but in some cases 10 pair is present. ठीक है. Now coming to the CNS, brain. So let's understand brain, how to divide or how to see the function of brain. Okay. So let's see, note down this. It is divided into 3 parts. सबसे पहले forebrain, आगे वाला brain का part, then midbrain, and then hindbrain. Okay. So what is present in forebrain? Note down that also. ठीक है. Olfactory lobes, so what is the role of olfactory lobes? Who can tell me why they are present? Is it done? Shall I move to this side? थोड़ा सा इसको इधर कर दो. If it's done, this part is done. So I'm moving it bit here. ठीक है. So olfactory, basically its role is sense of smell. जो smell है उसका पता करना, feel करना that something is being done. ठीक है. So olfactory lobes हो गया first. Then pair of cerebral hemisphere. Now we can say here it is a seat. यहाँ से जो है intelligence, यहाँ से memory, willpower, everything get controlled. So it's, we can say, seat of intelligence and memory. Then last is densifalon. It has many roles. First you note down this, then again I have to move with. We can say it's a relay center.
also control ANS, and there is many other function in metabolism, respiration also it work. ठीक है डेंसिफेलन क्योंकि it has pineal gland also. Is it done? This part is done. Now I have to erase some part. Okay. So I'm erasing all these parts. So we will discuss about midbrain and then hindbrain. Now midbrain. Everyone draw this in flow chart way. बेटा फिर याद रहेगा comparison साथ साथ हो जाएगा otherwise it will be difficult. Now it is having two optical lobes. Okay. Same in the sensing, it will help. Now coming to second, that is pleura. Cerebri. Now its role is serve to communicate impulse from hindbrain brain to midbrain, or we can say vice versa. It means ये हेल्प करता है सिग्नल या फिर बात करने में किसकी हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है. Write down this, then we will move to the hindbrain. Now coming to hindbrain, it is having two parts, cerebellum, and cerebellum is very important because it balances the body. It controls muscular movement. Now second is medulla oblongata. It controls involuntary activities, मतलब जो हमारे हाथ में नहीं है, like heartbeat, respiration, digestion, that is not in our control. हम खाना खाते हैं, बाकी अंदर जो हो रहा है that is happening itself, that is not in our control. We cannot say stomach stop churn. ठीक है. So it controls involuntary activities. So this is all about brain function. And lastly, we are going to draw the structure of brain. Then we are done with this system. क्योंकि diagram bio में without diagram you cannot explain physiology at least. ठीक है. हम सोच के नहीं कर सकते कि yes it is like this. We have to show it, है ना?
अगर मैं ऐसे बोलूँ ऐसा होता है, हाउ कम? ठीक है. सो नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स ब्रेन एंड इट इज वेरी इजी. सब मेरे साथ बनाओ. सो आई विल टेल यू. सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड. ऐसे बनाओ एवरीवन. ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है. देन वी विल मेक इट लाइक दिस. और यहाँ से भी हमने ऐसे निकालना है. एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो वी आर लाइक. Then make this structure. Make this structure. Yes. So draw this line and now label it. So we are going to label it. सबसे पहले यहाँ पर these are the olfactory nerves. Okay. And this is olfactory lobe. Cerebral. Densifallen. Optic lobe. Cerebellum. And then last we have medulla oblongata. Okay. So now जो भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे इन द फ्लो चार्ट, नाउ इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. इफ समथिंग लाइक दिस कम इन योर एग्जाम कि अपने फ्रॉग का सर्कुलेटरी, सॉरी नॉट सर्कुलेटरी. Okay, densiferen is also part that is in the forebrain. Okay, that basically controls ANS, autonomic nervous system. Okay, so that is its part.
And it is also, in that pineal gland is also there. Is it clear? Yes, Navjot beta? Like other, Yes. जैसे बाकी सब पढ़े, it is like that only. I hope now everyone, is it clear? These three systems are clear to you? Any doubt in this? किसी को? So try to make these diagrams. ठीक है? What is mimicry? Mimicry बेटा किसी की एक्टिंग करना, जैसे वो बोल रहा है उसी की तरह बोलना. So it is. Okay, you're talking about frogs. Okay. I thought normally you are asking about the what is mimicry. Yes, who can tell me what is mimicry in the frogs? Yes, any of you, but up to exam, you should know that mimicry is very important. Not important, we can say very normal thing. Yes, any of you? Yes, any of you? कोई तो बता दो. Gurjot is there? Okay, Gurjot is not here. Only few students have joined today. Let me click the picture, beta. Ma'am, it is group of frogs. Who said this? Ma'am, Navjot. Okay. Let me click the picture of who is present. Yes, it's done. Yes, now speak, beta. कौन बोल रहा था? नवजोत. Yes, Navjot. Yes, Ma'am, beta. it is group of frogs. Mimicry. Yes, ma'am. नो बेटा, मिमिक्री इज लाइक रियल लाइफ में जो हम करते हैं, किसी की कॉपी करना, है ना. कहते हैं ना आवाज, मिमिक्री आर्टिस्ट है. मिमिक्री आर्टिस्ट मतलब कि वो उसी की तरह आवाज निकाल के एक्ट कर रहा है ना. हम ऐसे कहते हैं ना कि कोई जो है, अगर आपने कोई लाफ्टर शो देखे होंगे तो यू कैन सी मैनी पीपल कम देयर एंड मिमिक अदर पर्सन, स्पेशली द सेलिब्रिटीज, है ना. उसकी तरह करते हैं. तो सिमिलरली इन फ्रॉग्स व्हाट हैपेंस टू सेव देमसेल्फ. ठीक है. समटाइम्स दे मिमिक. वो मिमिक मतलब करना हो गया अपने आप को किसी ऐसे फ्रॉग, जो उनके फ्रॉग्स में भी तो अलग अलग आपके जो है मिल जाएंगे. फ्रॉग रहना हो गया, देयर मैनी. तो जो पॉइजनस फ्रॉग हो गया या जो थोड़ा डेंजरस फ्रॉग है, उसकी तरह अपने आप को दूर से दिखाएंगे, सो दैट जो प्रीडेटर है कैन नॉट एक्ट ऑन दैट, कैन नॉट अटैक ऑन दैट. So that is mimicry. It's basically defense mechanism. Is it clear? Okay. So now with this, class is over, beta. Okay. Bye. Take care, everyone, and all the very best for your exam.